So first of all, congratulations, Uddipta, for achieving All India rank 83 in mechanical, GATE 2024. Thank you, sir. And Thank you. do let me know about your journey. कैसी रही ये प्रिपरेशन और कितने अटेम्प्ट आपको लगे टू गेट AIR अंडर 100? Sir, I am basically from Assam, where I did my engineering. मतलब मैं 2022 का पास आउट हूँ। तब जब 2022 का अटेम्प्ट दिया था, तब मेरा एग्जाम्स भी चल रहे थे एनसेम के। तो वो काफ़ी सीरियस अटेम्प्ट नहीं था। तो उसमें मेरी रैंक थी 2464। तब फिर मैंने सोचा कि एक साल ड्रॉप करते हैं। तो मैंने ड्रॉप किया, लेकिन unfortunately, I was not able to get a very good rank in mechanical paper. It was like 1735, but I did well in XC. XC, I got a rank around 198, and thereafter I joined MTech at IIT Guwahati itself. And this year I didn't prepare very much hard, but yeah, with God grace and your blessing, I secured this two-digit rank. ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि फोर्थ ईयर 2022 आप पास आउट हो और ऑल इंडिया रैंक 2464 आपकी थी। सो वाई सो Yeah. लेट, थर्ड ईयर में आपने अटेम्प्ट क्यों नहीं दिया? सर मतलब हम लोग के कॉलेज में प्लेसमेंट्स काफी अच्छे होते थे। तो आई हैड अ वेरी गुड सीजीपीए आल्सो। आई वाज हैविंग अ 9 पॉइंट प्लस सीजीपीए इन माय बीटेक। Then I thought I was hoping for a good placement, but due to some factors, things didn't work out in my favor. Then GATE was the option that I had, and basically I also wanted to go for these research institutes. So in my final year, I cracked this BARC written exams and one other DAE interview. But that also unfortunately I missed by 2 or 3 marks in both that, and maybe I was destined to be at MTech. So maybe this was God's plan for me. ओके, सो जैसे आपने बताया कि BRC के लिए भी आपने प्रेप किया एंड यू ऑल्सो प्रेप Yeah, फॉर द गेट एग्जाम, राइट? सो yeah, BRC you cleared it, but just for 1-2 marks, that was a bad luck for say, yeah, and yeah, it was not possible that you were able to go into that institute. But now IIT yeah, Guwahati is also good. MTech, you are getting a yeah, very yes, good sir. degree from a tier 1 college indeed. So what's the Yes, plan sir. now? Will you go for the multinational companies, domestic, foreign, or PSU jobs? Uh, right now, I have few options in my hand. So when I joined MTech at IIT Guwahati, I grabbed one internship opportunity at one of the leading R&D company. So I will be going for the internship in this month, May starting. So if I get the PPO, then it would be a good one for me. Then I have a good professor under whom I will be doing my final year projects. So he is insisting me for a PhD under him with some scholarships. And I guess I will also try for PSU jobs, and whichever works for me, I will go for that. Okay, so you have a Right now, I'm PPO not rigidly thrown offer. into anything. Yeah. Yes, Okay, sir. okay. So PPO means pre-placement offer for those students who do not Yeah, know yeah, yeah, what this is, yeah, because yeah. in tier 1 colleges that happen. In tier 2, tier 3 is just the final year thing, like आपको placement मिलती है और खत्म होता है. So PPO never happens. Yes. Nevertheless, as you told, there is not a fixed thing right now for you, because two options are there. Either you will do Yeah. PhD or you will do a job. Okay. So don't you feel that I have to go to DRDO or ISRO or BRC? I should give one more attempt. सिंस एमटेक के साथ तो आप कर सकते हो पढ़ाई, एंड यू कैन ऑल्सो Mm. यूज दिस गेट स्कोर फॉर द इसरो एंड डीआरडीओ. सो व्हाट्स Uh, स्टॉपिंग यू टू बिकम साइंटिस्ट एंड साइंटिस्ट बी और एंटर इनटू दिस इंस्टीट्यूट्स? I have written ISRO written exam, so I am hoping for their results also. But it is really difficult to do it with MTech. I mean, coding. So that's the thing. Okay, so basically you are trying everything. So ISRO also you wrote. By the way, ISRO Yeah, also recruit through GATE 2024. As we have seen in the past, they yeah. recruited through GATE 2023. So definitely you have a chance to get selected through this score. And yes, you are trying for that also, which means you have options open. चलिए अब बात करते Yeah. हैं प्रिपरेशन की. ये तो आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है उस पर डिस्कशन हो गई. सो प्रिपरेशन पर Yeah. आते हैं. जैसे आपने कहा कि पहले अटेम्प्ट में आपने गेट क्वालिफाई तो किया है, अच्छे खासे रैंक से किया है. दूसरे अटेम्प्ट में भी आपने गेट अच्छे खासे रैंक से ही किया है. एक्सी
absolutely good, 198 rank. But mechanical it was lagging 1735. So what do you think? Preparation में क्या कमी रही पहले दो अटेम्प्ट में in mechanical, and how come then now 83, a drastic jump from that? So when I analyzed this after the result, I found that main thing was the mindset. So after getting this internship offer, and I also hold an MTech degree, so my mind was quite relaxed. So मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि इस बार तेरा रैंक आ जाएगा। और एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो ही इज इन ए गुड प्लेस नाउ, तो वो भी कहता था कि इस बार तेरा माइंड रिलैक्स है, कूल आ जाएगा रैंक। मतलब इस बार कुछ ज्यादा प्रिपरेशन थी नहीं, 100+ टेस्ट, and I have watched like more than 2-3 times your probability videos. I was very bad at probability, random variables and all, but the way things worked out last year, it was not up to what my expectation, but it really did in my favor this time. ओके, तो इस बार आपके ऊपर प्रेशर नहीं था सिंस यू आर ऑलरेडी एट गुड प्लेस, Yeah. ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, जबकि जब आपने ड्रॉप लिया था सो देर वॉज अ प्रेशर कि नहीं हुआ तो क्या होगा, एंड सो ऑन एंड सो। हाँ। तो चलिए उस पर आते हैं। जब आपने ड्रॉप लिया तो ऐसा नहीं हुआ कि जॉब ले लेता हूँ, जॉब के साथ प्रिपरेशन करता हूँ, या फिर कुछ और चीज़ें इंटर्नशिप और समथिंग मैं कर लूँगा, साथ में प्रेप कर लूँगा। सो एकदम से कुछ भी नहीं करना एंड एक साल पढ़ाई के लिए देना। सो हाउ हाउ डिड यू टुक दैट बोल्ड डिसीजन, कैसे लिया, या कोई सपोर्ट सिस्टम था? Sir, I didn't have any drop years before that, so I had that good factor of my age, and my parents are very supportive in this manner. They doesn't question about anything. So yeah, because of all that and good support system from my parents, my well wishers, and I really have a very good friend circle. So they have supported me throughout this journey, and I guess without them, it would not have been possible. And people like you, the way you teach, it's so amazing to learn from you in every bit of things. Like I was not good in aptitude few portions like that, work and time. So you taught things like MDH masala and all that things, and it really helped. ओके ओके, सो आई गॉट इट, यू लव माई निमोनिक्स एंड द लर्निंग टेक्निक्स, जिससे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Yeah, वंस यू वॉच इट इट स्टिक्स टू द माइंड। yeah. I mean, मैंने इस साल मैथ्स एक भी प्रैक्टिस नहीं किया, zero. But only one question I missed in the exam, and others were really fine, doable. ओके, सो यू स्कोर्ड ऑलमोस्ट 90% प्लस इन मैथ्स। गॉट Yeah, इट, गॉट इट। तो आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम था जिसकी वजह से आप ड्रॉप ले पाए, एंड फ्रेंड सर्कल भी अच्छा था हु मोटिवेटेड यू। सो ऑल इन ऑल यू हैड गुड मेंटर्स एंड अ सपोर्ट सिस्टम, तो इतना तकलीफ आया yes. नहीं। एंड एनी हाउ यू परफॉर्म वेल इन दी सेकेंड अटेम्प्ट, जिससे आपका जो फ्यूचर जर्नी है वो एक सिक्योर ही रहा। सो लेट अस कम बैक टू द प्रिपरेशन अगेन, लाइक एज यू टोल्ड कि माइंडसेट अच्छा था, प्रेशर नहीं था, सपोर्ट सिस्टम था, दैट्स गुड। बट कमिंग टू द प्रिपरेशन पार्ट, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, तो कितने घंटे पढ़ाई किए, कितना टाइम लगा फॉर सिलेबस कंप्लीशन? सो देर इज अ लॉट ऑफ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, हाउ मच टाइम यू टुक फॉर द सिलेबस कंप्लीशन? Syllabus completion, sir, I did when in my drop year, I did by the end of August, and by the starting of September, I started to write the full length test. So near about comparing everything, I have written more than 200 tests, including this FLTs and subject-wise tests. Yeah, that's the thing. ओके, सो अगस्त तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑल दोस मंथ्स वर फॉर द टेस्ट, रिविजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। गॉट इट। सो इफ Yeah, दैट yeah. इज द सिनेरियो, इफ दिस इज व्हाट यू हैव फॉलोड, then I think a lot of practice was done. Then why not under 100 in the second attempt? Yeah. Because 1735 means you have done a lot of mistakes. So can you enlighten us about the mistakes you made? Mistakes, as I have told, I was very pressurized, so I missed very vital points in the exam. Then I did a lot of silly mistakes, calculation mistakes, and many such blunders. I mean, if mechanical people can relate to. So there was a question of Moore circle. It was really, really a very easy question.
So I missed that question, and when I came home, then when I saw that, I was like very dumbstruck that why did I miss this question. And yeah, I guess due to that pressure only, I was not able to handle it. But the next paper was XC. Then there I thought that okay, one paper has already gone into waste. So what will this paper do? So I was relaxed on that, and it worked that in my second paper. ओके, सो बेसिकली द पॉइंट इज आपका कंसेप्ट तो अच्छा था, प्रैक्टिस भी अच्छा था, बट वो जो प्रिपरेशन किया था आपने और वो जो ड्रॉप का एक था सर पे कि नहीं चला तो क्या होगा, और वो प्रेशर की वजह से आप ये चीज़ें मैं एक बार कह सकता हूँ कि झेल नहीं पाए होंगे। एंड देन बट एक बार आपका फर्स्ट अटेम्प्ट मैकेनिकल वाला रहा, फिर सेकंड एक्सी रहा, सो एक्सी यू आर एबल टू कोप अप, क्योंकि पहला पेपर खराब चला गया है, अब यही ऑप्शन है, इसमें तो अच्छा करना ही है। And you did calculation mistake and silly mistake, so this is very important for the upcoming gate aspirant के पढ़ाई कर रहे हो तो प्रैक्टिस में ध्यान रखना, silly mistakes कम रहे और कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम रहे। ठीक है। Hello? ओके, व्हाट जस्ट हैपेंड? Yeah, I just my Wi-Fi got disconnected. अच्छा, चलो तो हम Okay, थे sorry, sir. कहाँ पर? आपने बताया था आपके मिस्टेक्स के बारे में कि आपने सिली मिस्टेक्स की, कैलकुलेशन मिस्टेक्स की, Mm, और yeah. प्रेशर था कि ड्रॉप लिया था तो क्या होगा आगे, तो शायद उसके वजह से माइंडसेट इशू आ गया था उस टाइम, और Mm, आपका रैंक 1735 चला गया था। और फिर सेकंड पेपर आपका अच्छा रहा, सो ये आपने बताया कि वो इसलिए भी रहा क्योंकि एक ही अब लास्ट जो है डू और डाई, और एक बार अगर गलत हो चुका है तो अब इसमें गलती नहीं करनी है, कहीं ना कहीं वो भी बैक ऑफ द हाँ, माइंड। सो वो yeah. चीज़ थी। चल, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आपका जो मिस्टेक पार्ट था वो ये था, बट आपके कंसेप्ट और बाकी चीज़ें क्लियर थे। सो व्हाट वुड यू रेकमेंड टू दी अपकमिंग गेट एस्पिरेंट के सिलेबस कंप्लीशन के लिए कितना समय देना चाहिए? सिलेबस कंप्लीशन जल्दी कर लेना चाहिए था, मतलब कर लेनी चाहिए अगर आप ड्रॉप कर रहे हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम शुड बी invested in revisions and question practice. The more you solve questions, like if we solve more questions, then the formula comes up in our muscle memory. So एग्जाम में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज सिचुएशन बनता है, तब हम लोग का दिमाग अगर रुक जाए तो हाथ चलते रहना चाहिए। तो द मसल मेमोरी रियली हेल्प्स एंड इट इज नॉट अ myth, and that's all. You have to like really do a lot of practice and revisions, then it will come up in your flow to solve the questions in any situation. ओके, ओके, सो प्रैक्टिस इज दी की, आपके ओर से ये पता तो चल Yeah. रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ऑल दिस गेट एग्जाम? गेट एग्जाम से गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है, एमटेक मिलता है, सो व्हेन डिड यू गॉट द अवेयरनेस अबाउट दिस एग्जाम? I come from a very good college. It is a state government college, but my friend circle are very well informed about everything. So they used to prepare and they used to say all these things about PSUs and research organization. From there, it sparked some fire in me also that yeah, my friends are doing also, then I should also start doing it. ओके, ओके, तो आपके फ्रेंड सर्कल्स बहुत ही, आई गेस दे आर वेरी गुड इन इंटेलेक्ट ऑल्सो, एंड दे आर ऑल्सो वेरी गुड इन फ्रेंडशिप जोन ऑल्सो, दोनों साइड से आपको Yeah, मदद कर रहे थे कि प्रिपरेशन में भी एंड एज अ फ्रेंड ऑल्सो, तो बहुत बढ़िया है। सो यू आर अ काइंड ऑफ अ लकी पर्सन, क्योंकि yeah, जनरली जो yeah. इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फ्रेंडशिप होती है Yes, sir. सो फर्स्ट सेकेंड ईयर तक बहुत बढ़िया रहती है, एंड अपेरेंटली पीपल फाइंड देयर ओन वेज, कोई एमबीए कर रहा है, कोई जीआरई कर रहा है, and so on and so forth. But I guess the group Yes. you had was like on the same boat. Everyone was on the same boat. सभी एक ही शायद Yeah. टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते थे। So it's good, it's good. हाँ सर, ऐसा ही। तो चलिए अब आते हैं कुछ की पॉइंट्स पर, जैसे आप ये बता सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस कितना है, कितना उसे करना चाहिए, कौन कौन से एग्जाम के पीवाईक्यूज करने चाहिए और उससे मदद क्या होती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं।
स्पेशली हम अगर मैथ्स और एप्टीट्यूड को मिला है, वो हम सारे ब्रांचेस के कर सकते हैं। तो मैथ्स के लिए और एप्टीट्यूड के लिए मुझे नहीं लगता कि हम लोग को और किसी सोर्स पे डिपेंड करना चाहिए। We can solve them multiple times, and if you are solving them multiple times, our aim should be like to reduce the steps in every upcoming times we are solving it. Like if you are taking like 10 lines to solve a questions, then in the next attempt we should make it like little short and crisp so that we can get to the answer very easily. Like your courses are well there in YouTube where you practice questions like expected questions, that too are from previous year questions only, where you teach like multiple methods. So learning multiple methods helps to broad our thinking about that a simple question and how to solve that. Okay, okay. So basically, PYQs is very important because it gives the idea about the upcoming GATE exam, and more you practice them, more you are comfortable with this exam. चलो, तो ये Yeah. बात भी क्लियर हो गई। PYQs इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। अच्छे ग्रुप्स में रहोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, डिड यू मेड एनी शॉर्ट नोट्स, कंप्लीट नोट्स, सो दैट एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द डे, यू हैव समथिंग टू रिलाई ऑन, क्योंकि सारे के सारे लेक्चर्स या स्टैंडर्ड बुक से तो वापस पढ़ाई नहीं कर सकते। सो व्हाट वाज योर सोल्यूशन ऑन दिस? Sir, I have prepared long notes. Long notes consisted of theories, key points, and good numericals that I learned from test series or any video or any book. So it is a compilation of all that. And I have short notes only. Then in my this year's preparation, I only relied on my short notes. Like I used to revise when I get time in the morning, 5 minutes, 10 minutes. In night, I used to revise like half an hour. So short notes is very important in the later part of the time or when the exam is coming very near to us. ओके, तो जैसे आपने कहा कि लॉन्ग नोट्स आपने बनाए, एंड न्यूमेरिकल्स वो चीज़ है जो शायद यूनिक है, जो शायद इम्पॉर्टेंट है, तो उसका भी आपने एक सेपरेट चीज़ बनाया था। Yeah. सो एनी शॉर्ट नोट्स यू मेड जस्ट फॉर द फॉर्मूला, लाइक ब्रश अप और समथिंग लाइक दैट? Uh, no, my short notes consisted of key concepts and formula only, but not specifically only a formula sheet. I don't believe that will really work. ओके, तो आपके हिसाब से शॉर्ट नोट्स आपने अपने हिसाब से बनाए, नॉट जस्ट द फॉर्मूला थिंग। ओके, Yeah. सो तो आपके लॉन्ग नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहे। सो लॉन्ग नोट्स बनाने में भी समय लगता है। एनी टिप्स ऑन दैट, हाउ टू मेक लॉन्ग नोट्स वेरी फास्ट? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स लेक्चर देखते देखते बनाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स लेक्चर के बाद बनाते हैं। अब जो लेक्चर्स के बाद बनाते हैं बहुत टाइम चला जाता है, जो लेक्चर्स देखते देखते बनाते हैं तो लेक्चर पे फोकस करे या नोट्स पे, तो ऐसा हो जाता है। सो व्हाट्स योर टिप ऑन दैट? तो मैं जब देखता था तब मैं वीडियो लेक्चर्स देखता था और हमेशा 2x पे देखता हूँ. सो आई यूज्ड टू वॉच दैट इन 2x without making any notes, and whenever a question comes up I used to pause that video and I used to solve that, and after the class is over I used to make notes. It doesn't only consisted of what the educator has written in the board. It was in my language and other in like in my mother tongue also I used to scribble up something. So it helped that way for me, but it really takes time, so the amount of study hours had to be increased in the initial part when the notes making and video lecture series is going on. ओके, सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने 2x में देखा तो एक तो समय वहां पर बच गया, एंड Yeah. देन यू मेड द नोट्स आफ्टर द क्लास। द रीज़न Mm. वाज कि जो मैंने पढ़ा है मेरे बैक ऑफ द माइंड में है, तो वो चीज़ें आनी चाहिए। दैट्स हाउ आई कैन रिकॉल एंड रिलेट, क्योंकि अगर मैं खुद से लिख रहा Yeah. हूँ देन आई कैन रिलेट, एंड देन ऑल्सो यूज द मदर टंग लैंग्वेज सो दैट यू कैन रिकॉल ऑल्सो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स को लर्निंग लेनी चाहिए फ्रॉम दिस इंटरव्यू, दैट the complete notes if possible try to make by yourself. But if you have time issue, like you had a lot of time, so you can take that luxury of making notes. But students who have less time can try to go with the digital notes, PDFs or something like that. Yeah. ये तो नोट्स मेकिंग की बात हो गई, एंड इसके अलावा आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट माइंडसेट है, कुछ चीज़ें हैं जो गेट एग्जाम में, आपने तो सारा रैंक देख लिया लाइक 2000, 1000 एंड हंड्रेड्स, तो ऐसा क्या Mm. डिफरेंट होता है इन दी माइंडसेट दैट गोइंग अंडर 100 इज, दिस आर दी की पॉइंट्स यू हैव टू फॉलो?
लाइक आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, हम लोग का अगर रैंक काफी खराब भी आ जाती है, तब भी मुझे नहीं लगता कि हम लोग को अपना मोरल डाउन करना चाहिए। तो बैक ऑफ द माइंड वी विल गेट दिस कॉन्फिडेंस। Rank, I don't believe it gives you confidence. It is the amount of work that you have put it into gives you confidence. So, like in my this year's attempt, I have put a lot of work in my last year. So, back of the mind, I always believe that that was a day which was unfortunate for me. That is why it didn't work out for me. But every year it will not be the same. So, since I have worked so much hard on it and I have put in so much work on it, so it will work out. So there was a belief in me, belief I had on me, and yeah, you should have faith on yourself, God, and rest. You can work hard, and things will work out in your favor. ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने कही है। सबसे पहले तो आपने ये कहा है, इवन इफ यू प्रिपेयर वेरी वेल देर इज़ अ चांस दैट यू कैन बी अनलकी, क्योंकि कुछ भी हो Yeah, सकता है, कभी हेल्थ खराब, कभी माइंडसेट इशू, कभी कुछ। एंड इफ़ यू गेट अनलकी डोंट ब्लेम योर सेल्फ, क्योंकि आपने अगर मेहनत की है तो मेहनत का रिजल्ट आएगा। विच यू ऑल्सो yeah, सेड कि जब नेक्स्ट अटेम्प्ट किया तो मेहनत का रिजल्ट हमें दिखाई दिया। एंड यू yeah, हैव टू हैव अ गुड मोरल कि अगर मैंने प्रिपरेशन किया है तो वो अच्छा ही होगा, और अगर अच्छे से प्रिपेयर किया है तो अच्छा रिजल्ट ही आएगा। mm, और ऐसा कई बार होता है कि yeah, अगर पेपर टफ आ जाए तो खुद को डिमोटिवेट मत करो, क्योंकि अगर आपके लिए टफ है तो सभी के लिए टफ है, और अगर true. आपके लिए इजी है तो सभी के लिए इजी है, तो एरोगेंस में भी मत Yeah, आ जाना। सो हाँ, दैट्स वेर यू टोल्ड अबाउट द माइंडसेट, यू शुड हैव अ गुड माइंडसेट एंड फेथ इन गॉड, अपने हार्डवर्क पर बिलीफ। और अगर टीचर्स पेरेंट्स सबका सपोर्ट रहता है तो यार तो नैया पार हो जाती है। चलो, तो ये हो बात जाता भी, है। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट, यू टोल्ड के मैथ्स एंड एप्टीट्यूड आपने मुझसे पढ़ा। सो इन मैकेनिकल देर आर ऑल्सो टेक्निकल सब्जेक्ट्स, सो यू कैन टेक द नेम ऑफ द टीचर्स कि किस किस टीचर से आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन गेट द आइडिया कि कौन से टीचर्स ने आपको मदद की। At first, I would say I didn't have any coaching in my part. बट जो अनअकैडमी के चीजें होती थी, तब मेरे दोस्तों के काफी अकाउंट्स थे अनअकैडमी में। तो हम्म। मैं उनसे पूछता था कि हाँ तेरा अकाउंट दे दे। तो वन ऑफ माय फ्रेंड रिकमेंडेड कि हाँ कि गिल सर का वीडियोस देख सकते हो। तो या for technical part, I would suggest JS Gill's search video. They are in YouTube also, so everyone can rely to them. He does good theory concepts and question practice. And about you also, one of my friend recommended. He recommended me Uma sir also, but with you the compatibility was much better in my part. So yeah, both of the teachers, I it really worked on my part on that thing. Okay, so technical you told only Gil sir. There So are many JS Gill sir subjects. and So any more teachers if you want to recommend? yeah, production people can go with SK Mandal sir, or I yeah, SK Mandal sir would do good. Then thermal part, people rely with JS Gill sir. And nowadays here also started teaching the design part also, like strength of materials, machine design, and all that. He teaches industrial part also. Like he covers up almost everything, so we can really rely on him, like to for 80% of the syllabus. Okay, so got it. So basically, more or less, you have studied through limited teachers only, and Yeah, you believed on them, and बस आपको अगर compatibility लगती है, आपको जमता है, तो फिर तो यार चीज़ें हो yeah, जाएगी। So syllabus completion yeah, is one thing, but getting the in-depth पकड़ on a subject is a different thing. तो वो जो yeah. in-depth जो वाला part है, वो कैसे आपने achieve किया? Multiple revisions and lot of question practice on that. Okay, and do you believe syllabus Like completion is just the I had a Do you believe syllabus completion is just the tip of the iceberg, and the lower part of that is actually where most of the effort should be made? So yeah, that's really very true. Yeah. हाँ, तो आपका भी ये मानना है, बिकॉज Syllabus इट्स completion इम्पोर्टेंट। doesn't give you marks. You can just cross that 35 range. Yeah. ओके, ओके। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल आपने सारी बातें बताई दी है इन अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी हाँ, क्रिस्प फॉर्मेट, कि आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था एंड यू स्कोर्ड अंडर 100 रैंक।
फर्स्ट अटेम्प्ट आपका पास आउट के समय था, सेकंड आपने ड्रॉप लिया था, नाउ यू आर इन एमटेक IIT गुवाहाटी, ओके, एंड you had a dream to go in the good PSUs also, as you told, or maybe if you get along the way MNC company, you are okay with that, या फिर PhD करना है तो उसके लिए भी ओके। सो आपने BRC भी लिखा, इसरो के बारे में भी बताया, सो दिस गिव्स द इंडिकेशन दैट यू वांट टू गो इन अ टेक्निकल फील्ड, एंड अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आपको जाने का इच्छा है। एंड ऑल्सो यू टॉक्ड अबाउट दी माइंड सेट के प्रिपरेशन करते वक्त क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, बहुत सारी आपने बातें कही। साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि नोट्स मेकिंग इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, रिविजन इंपॉर्टेंट है, और टीचर्स के बारे में भी बताया जहाँ पर स्टूडेंट्स को एक आइडिया आ जाए कि नॉन टेक एंड टेक अगर ये चीज़ें हैं तो कैसे और किससे पढ़नी है। अच्छा, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपका वीक था बहुत और फिर आपने उस पर बहुत मेहनत की, एंड अगर मेहनत की तो कैसे मेहनत की और कैसे उसको इम्प्रूव किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट का एक दो सब्जेक्ट तो वीक रहता ही है, वीक यानी बहुत ज़्यादा वीक, हम्म। तो वहां से आप कैसे निकले? हाँ, तो प्रोडक्शन एक बहुत मेजर एरिया है मैकेनिकल के पार्ट में। सो वो मैं भूल जाता था, और मतलब उसमें मुझे काफी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी नहीं थी, तो इट वाज लाइक मेमोराइजिंग द थिंग्स एंड लाइक सॉल्विंग द क्वेश्चंस। But it really is that way only. We have to believe in that. And by with doing multiple revisions, I thought that okay, it works this way. So if these questions come up with this trick, so this formula can be modified and it could have been placed in this way, so to solve the questions. So yeah, multiple revisions helped me. ओके, तो And जैसे आप, solving ESC previous year questions. ओके, आई गेस आपका नेट जो है थोड़ा सा लैग कर रहा है, इज इट क्लियर नाउ? Network is still bad. It is raining. Yeah, ओके, ओके, आपकी ऑडियो आ yeah, it's रही थी fine. बट आपका वीडियो थोड़ा सा लैग कर रहा था, बट आई गेस अभी चीज़ें क्लियर है। तो आप कह रहे थे आपने ESC के भी It has पेपर been टेस्ट? uh, raining. ओके, इट्स अगेन लैगिंग, एंड यू टॉक्ड अबाउट इट्स रेनिंग। Yeah, it's raining from last night. So the internet connectivity is little bad here. ओके, सो इट्स स्ट्रेंज, हमारे यहाँ पर तो गर्मी है बड़ी, मुंबई के अंदर, एंड इन आसाम आई गेस इट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके। चलो, तो मुझे लगता है मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं एज पर द स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट। जो जो Uh, चीज़ें उन्हें चाहिए थी, जैसे आपसे गाइडेंस, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स, तो सारी चीज़ें उन्हें इस इंटरव्यू से प्राप्त हो चुकी होगी। चल, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग उदीप्ता जी, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, काफ़ी ऑप्टिमिस्ट हो आप, एंड बहुत क्लैरिटी है आपके थॉट्स में, जैसे आप हर एक चीज़ बता रहे थे, एंड ऑल्सो यू आर लकी, okay, that you got so much yeah, of good support system and friends, and surely your hard work is indeed, मतलब यार क्या ही कहे, मतलब गिव अप नहीं किया आपने, तीसरा अटेम्प्ट था, एंड यू हैड अ ड्रीम कि अच्छा रैंक लेकर आना है, मेहनत पूरी है, तो यार उसमें दिखना भी चाहिए रिजल्ट्स के अंदर। सो इट्स गुड कि आप हार्ड वर्क करने से डरते नहीं हो, एंड इनफैक्ट यू गॉट एमटेक, यू स्टिल हैड दैट फायर इन यू कि एक बार और लिखेंगे गेट एग्जाम और चेक करेंगे इस बार क्या होता है। So thank you for joining. Thank you for sharing your journey. काफी मजा आया. And yes, that's it for today. thank you for having me here. Thank you. Thank you.